Tension continues to grip Malkangiri after the shocking recovery of a headless woman's body from a river near Rakhelguda village. In response to the escalating situation, Odisha Director General of Police Yogesh Bahadur Khurania reached the district on Monday to assess the ground realities. Senior officials SIW DIG Akhileshwar Singh and ADG Sanjeev Panda also arrived as the top police brass reviewed the developments in a high-level meeting at the Malkangiri SP office. Meanwhile, unrest persists in MV26 and Rakhelguda villages where tensions between two groups remain unresolved. The issue echoed inside the Odisha Assembly as well. During 0 hour, BJD MLA Pratap Deva strongly criticized the state government, calling it unfortunate that the Home Department had no prior information about the situation. BJD leader Pradeep Majhi later reached the ground zero and questioned the government's approach in handling the unrest. एठी ना पुलिस प्रशासन अच्छी ना राज्य सरकार एठी तत्पर अच्छी ना जिला प्रशासन अच्छी चाहिए या आयत्त कर पारती 1 तारिख गोटे घटना घटीगलाणी एवं सरकार संपूर्ण नीरव क्या पक्षर गोटे स्टेटमेंट भी आसुना जे कौन करा जीवो एवं जेतेबेले परिस्थिति अणाया थला आज एठी पुलिस छाउनी करा जाई कहा पई राज्य सरकार संपूर्ण भाव दायी। गत 3 तारिख दिन से माने निखोज केस गोटे देले कोरकोंडा थाना रे एवं 4 तारिख रे तार लाश बाहरला एटा गोटे दुर्भाग्य सेति पय हमें बारंबार कहूचु जे ओडिसा रे आईन परिस्थिति पूरा बिगड़ी जाई। In response, the ruling BJP asserted that the government is fully aware of the incident and that investigation is progressing. गंडोल होबार आशंका अछि गंडोल बध हेछि एवं तत्क्षण मालकानगिरी एसपी श्री पाटिल तांकर दायित्व नेकी सेठी शांति श्रृंखला रक्षा करिया सहित 2 जन को गिरफ्त करिसेंती एवं तदंत चालू रहिछि एवं घटना नियंत्रणाधीन अछि। तेणु सरकार या संपूर्ण सचेतन अच्छा एवं आकु कौन सी दुर्घटना जमी घटब ना से खोद एसपी एवं एडिशनल एसपी मजिस्ट्रेट समस्त उपस्थित अच्छा तदंत जारी रही।